हाय फ्रेंड्स, आज आम मोर गोटे मिक्सचर घरे अच्छी से मिक्सचर स्टार्ट हो बंद हो जाउछि बारंबार प्रॉब्लम आसे मिक्सचर विथ ग्राइंडर एटा। तो चलो देखा बर्तमान एवं आज तो किन मु रिपेयरिंग करछि। तार चारिटा एडे अच्छी 5टा स्क्रू अच्छी। पांचटा स्क्रू अच्छी, 5टा स्क्रू खोली देली बर्तमान खोलिकी देखो खोली देली। एटा हूँ मोटर, एटा हूँ ओवरलोड। एटा हूँ ओवरलोड सेटा और हूँ स्विच। तो आमर कौन अच्छी स्विच ठीक अच्छी, मोटर ठीक अच्छी, किंतु बारंबार कौन अच्छी चलुची बंद हो जाउछि। तबे प्रॉब्लम कौन हेतिबो चलो देखा। देखु एमती केस रे एडा हूँ ओवरलोड रिले। तो आपको चेंज करदेले तुम समस्यार समाधान हो। देखु मु बर्तमान एडे चेंज करदेली नुआ आड़े मात्र 20 टंका तार प्राइस। नुआ 20 या 30 तार मैक्सिमम प्राइस नहीं। बर्तमान मुझे चालू करदेली, लगेदेली। बर्तमान इंस्टॉल कर चालू कर देखा आपको काढ़ा देखु। आर 2टा पिन अच्छी, गोटे पिन अच्छे, गोटे मोटर को जाऊँगी आ गोटे तुम मेन सप्लाई रु जोड़ा आसुव सेटा एपटे कोटे कनेक्टेड होटे कनेक्टेड हो। तो से 2टा जा वायर, गोटे वायर मोटर रु आसुची ब्लैक वायर, आएपटे आसुची रेड वायर। तुम रेड या ब्लैक तुम जहाँ भी आसो तुम बोर्ड रु आसो कनेक्शन एट। कारण आईरे न्यूट्रल लाइन रे आसो मोटर जिते बड़े स्विच रे सप्लाई जीवो। तो आमर जो मेन कनेक्शन अच्छी मेन सप्लाई होची स्विच को जीवो फेज। तापर जमती रेगुलेटर स्विच ऑन हो तो सप्लाई जो मोटर रू सप्लाई जो आसो फेज एडा फेज आसो आ तुम जो डायरेक्ट न्यूट्रल आस न्यूट्रल। तो यहाँ एक्टिव काम कर। चलते मु ऑन करी आपको देखा सक्सेसफुली है कि ना। चलो देखा स्टार्ट कली मु स्विच। एटा एमती गोटे एक्सटेंशन बोर्ड नहीं काम कले सुविधाजनक हुए। बर्तमान मु स्टार्ट कर देखो। देखो साधारण गोटे 30 टकर जिनस आप मार्केट नहीं जी बनवाई आप 300-400 टका नहीं पारे कि 200 टका नहीं पारे। तेणुक साधारण जिनस आप निजे खोली कर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओडिशा।